Ladies and gentlemen, please welcome member of Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, Dipan Mehta ji. And I'm going to also request Anshuman Tiwari, editor Money9, to accompany him on the stage. Please, तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीपन मेहता जी का एक huge round of applause for Mr. Mehta and Anshuman ji. Over to you, Anshuman sir, for the most important session of the day, sir. Thank you, Priyanka. Thank you, Gaurav. We are just at the end of our summit, and this session, before we start the session, let's play the AV so that we can again know about Money9, what Money9 is doing, and also we would like to introduce a data coin initiative with Dipan, and then we'll start our discussions. So kindly play the AV, please. जिंदगी की कठिन पहेली, कमाते हैं तो जी नहीं पाते, खर्चते हैं तो खाली हो जाते हैं, बचाते हैं तो फंस जाते हैं, निवेश करें तो कहां करें। अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल। अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की। सतारा में रहते हो या सहारनपुर में, जालंधर के हो या जलपाईगुड़ी के, हम्पी में ठिकाना हो या होसूर में, पैसे की जबान एक ही है, उम्मीदों की उड़ान एक ही है। अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल। अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की। Money9 brings India's first personal finance interface, the Data Coin. Money9 Data Coin will help policymakers and BFSI industry to feel India's financial pulse along the length and breadth of the country. Data Coin will exclusively provide access to granular data of India's biggest personal finance survey conducted by Money9 between May to September 2022. The personal finance survey of Money9 has covered over 31,000 households, 20 states and 100 districts. The survey findings were widely covered by the media. Personal Finance Survey is an annual exercise and its next edition will be launched this year, which will be wider and deeper than the last one. Data Coin will also offer secondary data on personal finance products like insurance, savings, gold, property, debt, mutual fund and stock market. Ladies and gentlemen, here comes Data Coin, India's first personal finance data interface, exclusively for policymakers and BFSI industry. Thank you. Let me welcome Dipan again. Dipan is one of those minds who actually lead the Indian stock market and the equity culture. And this session, which is very important session, as Priyanka told and our anchors told, a very provocative one. I've kept it slightly provocative for Dipan. In giving the given situation, the topic which I think Dipan can guide us best, that why should a small investor trust on a stock market? अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है कि छोटे निवेशकों को स्टॉक मार्केट पर भरोसा क्यों करना चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन लास्ट 1 year. So I'll request Dipan to speak on it, and then we will start our question answer session. So I'll request you that you can, if you want to speak from here. Am I audible? Yeah. First of all, thank you for welcoming me over here. It's been a real privilege to be part of this fabulous event. And truly, I wish and desire that your newly launched app is a great success, because that is the need of the hour. And I'm truly motivated by your objective of financial inclusion, because coming from the financial services industry, I think the only way we can go into the next orbit is when we have many more small investors coming into our ecosystem. So a little bit about today's topic, why should small investors trust the stock market? My basic take on this is that
Trust is a very important factor when it comes to investing in any asset. And trust is something which even the most high net worth investors all the way to the small investor and even the poorest of the poor, when they are putting their money in any asset, bank or any chit fund or any such financial product, trust is one of the most important thing. And the reason why I think small investors should trust the stock market is at two levels. First of all, whenever we are investing our hard-earned money in any asset class, what we are investing is we are investing to achieve a particular goal. For someone who's just starting his life, it could be buying a motorcycle, buying a house. Later in age, it could be education, and then maybe children's marriage, and so on and so forth. So when we are investing money in any asset, including stocks, it is to achieve a particular goal. So the first level of trust in the stock market is, if I put my money in stocks, will I be able to achieve my goal? That's the first level of a trust factor that has to be created and is present in the stock market. Because if you look at the historical returns, and if you'll invest for a long period of time, the historical returns of the Sensex over the last 30, 40 years has been around 16%. And even if you look at the last 5, 10, 15, 20 years or so, the stock market, the indices have been able to generate at least 12, 13% type of return. Plus you have the dividends, and there are many mutual funds and individual stock portfolios which are done even better. So from an objective of achieving your goal, you can trust the equity market to deliver decent returns, compounded returns year after year. Maybe 1 or 2 years may go badly, but over a long period of time, 3 years, 5 years, 10 years, it will generate returns which will help you meet your goal. So that's the first level, the trust comes that the stock market can help you achieve your goals. The second level of trust is the fact that you don't want to make a loss. There should not be any accident. And on that particular aspect, I'm pleased to inform you that in the last 2 to 3 years, the entire financial services industry, mutual funds, equity, portfolio managers, AIFs, entire sector has been revamped. The regulation has been revamped by SEBI to make it far more transparent, to make it far more trustworthy, to prevent presence of any frauds, undesirable elements rocking the market. And there are so many disclosures, and there are so many steps which have been taken by SEBI, by RBI, by the government to ensure that the money is safe for the investor, safe from all the intermediaries who are managing the money, safe from the companies also in which we are investing our money. Because in the past, there have been many issues where small companies have completely disappeared, and because of that, investors lost their money. But now the way the systems are in place, the monitoring systems, the disclosure systems, the way they have to inform the stock exchange and the public at large, a lot of the loopholes have been completely blocked. So from a regulatory perspective, which is amongst the best in the world just now, the money of the investor is completely safe. One more important aspect when it comes to trust and safety is the ease of doing business in the capital market. Now, thanks to all the initiatives taken and so much of technology which has been built in, UPI and also online registration, the quantum of paperwork has gone down significantly. And now it is possible for anybody with a smartphone to seamlessly and without any document open a trading account or a mutual fund account or buy an insurance policy, then actually transact over it, make sure that whatever has been purchased has gone to their demat account, and then there are a whole host of MIS reports which are easily available at the tap of a button. So the entire process is so easy, fulfilling, and stress-free from the point of view of the investors. So I think from a trust factor, as I said, the 3 things: you can trust the stock market to deliver returns which will help you meet your goals. You can trust the regulator and the systems in place
to ensure that there will be no frauds, there can be no complete loss of capital. And third is the ease of doing business for you as an investor in the market. I think all of these three things is what creates the trust factor, and which is what I think will draw a lot of investors into our market. Now we can keep talking about the potential of the stock market, and I'm sure through the day speakers have spoken about the potential of the stock market. But I would just like to end by saying that I've been in the stock market for 40 years, and I have never been this positive on India than ever before. I know that there are short-term tremors, there are problems from time to time, but I think there is a confluence of many positive factors. वो बोलते हैं ना, सब तारे मिल रहे हैं, so that this is going to be the decade, or the next 2 decades will belong to India. And we can go into a lot of those factors, and I'm sure you've been going through it through the day. But I think that this is a once in a lifetime opportunity for the small investor, the large investor, to invest and build lasting capital for the family, which can be intergenerational. You can transfer it from this generation to the next generation. So this is a once in a lifetime opportunity which investors should never miss. And I truly appreciate your initiative to get more and more people into the equity markets, into the mutual funds, because that's when they will get the maximum fruit of what this country has to offer. Thank you, Dipan. So I will begin the question with first question. पहला सवाल जो बाकी लोग भी हमारे दर्शक भी, and दीपन इसको हमारे 7 अलग-अलग लैंग्वेजेस की YouTube चैनल्स पर लोग लाइव देख रहे हैं सुबह से इस पूरे सेशन को. Before I begin the discussion, first quick question I would like to ask you: which one most important regulatory reforms you would like to mention here in last 2 years, which can go a long way to building trust for small investors in the stock market? Which one reforms you think that has been actually changed the entire trust factor in the stock market? एक तो पूरा हमारा सेटलमेंट सिस्टम ही बदल दिया है. सो पहले क्या था कि all of the assets were there with the stock brokers. अभी पूरा सिस्टम बदल दिया है, where the asset remains with the investor. And even when आपको security deliver करनी है, when you have sold, it is only a blocking mechanism in your demat account, or there is no actual transfer of securities from your account to the broker's account. So वो एक बहुत बढ़िया एक safety net बन गई है for the investors, because your property remains with you, and only when you are selling it, it is going directly to the clearing house. और जो margining system भी है, a lot of reform has taken place over there from SEBI to ensure that the stock remains in your demat account, and yet you get the benefit of trading in the stock market. So that is from point of view of investing in equities. When it comes to mutual funds, so they have done so much of reforms over there to ensure that there is no mis-selling of the mutual fund. यानी कि अगर आप large cap fund खरीद रहे हो, तो most of the stocks in that particular fund will be large cap, or the universe of large cap also stocks have been defined. तो जो पूरा segregation किया है in the mutual fund industry, और जिस हिसाब से transparency आई है mutual fund industry में, that also is I think a very important reform process. And third, of course, is the way KYC can be done without any paper. I think this is really a beautiful system. I don't think there's any parallel anywhere in the world where without any paperwork, just with your Aadhaar card, you can open any demat account, any mutual fund account, and it is so hassle-free and happens in a few minutes. So Dipan has told this one recent initiative, सबसे important initiative जो अभी हुआ है, जिसमें कि brokers के limits तय किए गए हैं और वो निवेशकों का पैसा अपने पास नहीं रोक सकते. ये बड़ा सुधार है. इस रिफॉर्म से स्मॉल इन्वेस्टर्स को काफ़ी भरोसा मिला है. इसके बाद भी एक सवाल बराबर उठता है दीपन कि भारत का में बेस्ट रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट हैं, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स काफ़ी स्पीड से हैं, एक्सचेंजेस अच्छे हैं, बट स्टिल वाई दिस इक्विटी कल्चर इज़ नॉट कमिंग अप द वे इट शुड? बिकॉज इंडिया में फाइनेंशियल सेविंग की हैबिट्स हैं, एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स में है, फिजिकल सेविंग्स में ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने कंसिस्टेंटली, आपने कहा 15-16% का रिटर्न दिया है, अभी पिछले 2 साल तो बहुत अच्छे रहे. उसके बाद भी व्हाट इज़ देयर वन big hurdle which is stopping people, which is not letting people to come into with more aggressively to the stock market? And why this is important? Because the more people will come, more stability will come into the stock market, depth will grow, and we will see more funds coming to the market. Why this is happened? What is stopping it?
आई थिंक आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोग मार्केट में भी ये सोच रहे हैं कि इतने मिलियंस ऑफ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, फिर भी रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे घट रहा है, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ शेयर क्राउड थिंकिंग, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुल गए हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड अकाउंट्स भी खुल गए हैं, and people have definitely ventured into direct equity or mutual funds, or they have deployed their money also, but when they are trying to do it themselves, तो उनके returns इतने अच्छे नहीं आए हैं। they are perhaps going into options, futures, या फिर ऐसे stocks में invest कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है about the stock market। तो ये जो एक बहुत बड़ी need of the hour है is the need of professional money managers। माने इंडिया में हज़ारों ब्रोकर है, but we don't have good quality investment advisors, we don't have good quality portfolio managers। और अगर आप देखेंगे तो at the absolute HHNI level, माने आपके पास 1 करोड़ के ऊपर पोर्टफोलियो है, तो every fund manager, every money manager, portfolio manager is after you to manage your money। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट करना है और इससे कम है, तो आपको कोई पर्सनलाइज एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आपको कोई बराबर गाइड नहीं कर रहे हैं, और आप ऐसे ही या तो दोस्तों को पूछ के इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ अपना पढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो द नीड ऑफ द आवर इज़ टू गेट मोर एंड मोर क्वालिटी एडवाइजर्स हु कैन केटर टू द मास मार्केट। और इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो आपका पहले भी था, आपका इससे पहले जो आपका टॉपिक था फिनटेक्स, these fintech companies can play a very big role, क्योंकि they will use technology to connect with people and they will use technology to deliver their advice and complete the execution process। So I think मेरे हिसाब से ये हमने पूरा जो वेव देखा था डिस्काउंट ब्रोकर्स का, and we saw so many companies like Zerodha, Upstocks, they have created a lot of value for investors and for themselves। तो जो नेक्स्ट बड़ा वेव आने वाला है फाइनेंशियल सर्विसेज में, that wave will be quality advice to the smallest of investors, and that is the need of the hour, and that I would say is something which a media house like yours should focus on with the app. If you can empanel or onboard many of these smaller investment advisors, then they'll be able to cater to the mass market। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर आप आंख बंद करके निवेश नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ता है, और फिर टाइम टू टाइम आपको आपका पोर्टफोलियो है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे इक्विटी हो, आपको उसको रीशफल करना पड़ता है। तो यू नीड हैंड होल्डिंग, और वी आर वेरी बिजी इन अवर लाइफ्स, तो टाइम नहीं दे पा रहे। तो अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है तो इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। Dipan, Indian regulators are doing really fantastic job. But if you go back and see that investors have lost a lot of money not because of the regulatory mechanism per se, but the poor corporate governance in India. And majority of the losses of small investors is because the companies are not managing their affairs properly. A lot of hubris, there are a lot of bad decisions, and they finally landed into huge wealth destruction in the market. इस मोर्चे पे आपको क्या लगता है? Whether our regulators are somehow required to be more pragmatic? How do you see things coming in terms of where, because ultimately people don't know what is happening inside the board of a company. They simply buy the stock and then finally land into losing a lot of money, which is hard-earned money for Indians they are putting in the market. Where does this stands in terms of the Indian regulatory system? Because that directly connects with the wealth creation and wealth destruction in the market. तो आई थिंक जो सत्यम का जो स्कैम हुआ था उसके बाद बहुत सारे रेगुलेशंस आए हैं। द एंटायर कंपनीज एक्ट हैज़ बीन रिवैम्प्ड एंड सेबी आल्सो हैज़ गॉट वेरी प्रोएक्टिव इन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन आए हैं एंड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद देम टू एंश्योर दैट देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ कंप्लीट एंड क्विक रिपोर्टिंग, और अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। सो देयर आर मेनी मेजर्स बीइंग टेकन एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आल्सो उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल चुके हैं। और एक्चुअली आप देखेंगे तो पिछले 10-15 सालों में देयर हैज़ नॉट बीन एनी मेजर लैप्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर से। और जो भी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है
that has come because of over indebtedness. माने कंपनियों ने बहुत ज़्यादा लोन ले ली, प्रोजेक्ट डाल दिए, प्रोजेक्ट फेल हो गए या डिले हो गए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट के मीटर बढ़ते गए एंड देन दे वर नॉट एबल टू गेट द प्रोजेक्ट वायबल. तो आप देखेंगे द बिगेस्ट मैक्सिमम लॉसेज, आई वुड नॉट लाइक टू नेम ऑन अ पब्लिक फोरम, but the maximum losses to investors have come from the large companies which have they've been in infrastructure, in telecom. और यहाँ पर जो है ना पिछले कुछ सालों में RBI ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, यू नो, फॉर्सिंग द बैंक्स टू रिकग्नाइज द NPAs, ये ensuring that अगर आप डिफॉल्ट हो रहे तो इमीडिएटली आपको NCLT में जाना पड़ेगा, एंड दे हैव क्लीन्ड अप द फुल फाइनेंसिंग सिस्टम फॉर प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक दिस विल गेट रिपीटेड अगेन. सो ऑन वन हैंड सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस किए हैं टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं एंड नाउ वी अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और दूसरी लेवल पर RBI ने इतने सारे मेजर्स किए हैं कि आई डोंट थिंक दैट फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेकेड्स we'll be in the situation where there are such huge losses because banks have lent to companies and companies have not been able to repay their debt. So I think that risk factor is gradually coming down. और इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स खरीदते हो विच हैव गॉट लो डेट, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, बढ़िया बिजनेसेस है, ब्रांड्स है, टेक्नोलॉजी है, नोन नेम्स है, then I don't think you can go wrong. The problem comes कि आपको आपकी greed उस लेवल पे ले जाती है कि you want to buy the momentum stocks. Momentum stocks में हमेशा आप cannot be a winner. दीपन, इन्वेस्टिंग में हमेशा एक कहा जाता है कि सबसे अच्छा बाजार वो होता है वहाँ जहाँ पे आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं, जिनका को कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हीं का स्टॉक भी खरीद रहे हों. इंडिया में अभी वैसा होता नहीं दिखता है. एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट इंडिया का स्टॉक मार्केट से बाहर है, एक चीज़. दूसरा ये कि सेबी की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रमोटर्स में अभी भी अपनी इक्विटीज़ को होल्ड करके रखने की, मार्केट में डाइवेस्ट नहीं करने की, नॉट गिविंग मोर शेयर टू द पब्लिक इज आल्सो अ बिग चैलेंज. सेबी इज एक्सटेंडिंग दीज डेडलाइंस. व्हाट इज स्टॉपिंग इंडियाज बिग ब्रांड्स विच आर नॉट कमिंग to the stock market but they are actually capturing lot of consumption in India, like in food market or in automobile market. बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो मार्केट में नहीं है, हम उनके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं बट उनके स्टॉक्स नहीं है मार्केट में. और what is stopping promoters in India not to to divest their equity in favor of public? देखिए मेरी राय में the mass consumption items, the companies which are not listed are mainly MNC companies. जैसे कि we are using Netflix या Amazon आप use कर रहे हैं या फिर Hyundai मोटर कारें, they will never get listed in India. That is clear. अभी मैं आपको ये बताऊं कि a lot of the new generation platform companies, the new generation companies, they want to get listed. लेकिन जिस हिसाब से आपने देखा पेटीएम, जोमैटो, नाइका, ये मेरा अगला सवाल भी था आपसे. So these companies maybe they got listed ahead of their time. Maybe the valuation was excessive at that point of time, and because of that, जो experience हुआ है इन कंपनियों का, that has put complete cold water on all the other companies of similar class which were looking at getting listed. तो उनका पूरा जो दरवाजा था वो बंद हो गया because people made so many losses in these 3, 4, 5 companies which got listed. वो तो उनका तो IPO हो गया, उनके इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिल गया, they must be laughing all the way to the bank, but we are left holding all the shares over there and Indian investors have seen huge mark to market losses. तो इसकी वजह से जो स्टार्टअप्स है इंडिया में, जैसे कि ओला है या फिर फ़ोन पे है या फिर स्विगी है, these are again day to day items which we are using. I think they will take very long to get listed because they are not profitable. Or markets में we now are looking for these companies to actually show the profit. और अगर आप देखेंगे ना तो ये एक बहुत ही healthy trend है, क्योंकि कुछ सालों में ये जो promoters है, जो new generation companies है, they will not think in terms of cash burn. जो पूरा एक cash burn एक ऐसा था कि जितना आप cash ज़्यादा burn करते हो उतनी ज़्यादा valuation मिलेगी आपकी. तो वो पूरा जो thinking है ना वो reverse हो गया है. And now every startup company, whether it is listed or unlisted, their shareholders, whether they are in public or private, they want a perfect roadmap to profitability. तो ये culturally I think ये बहुत ही अच्छी बात है, and it will improve the productivity of these companies
and therefore improve the productivity of the nation as well, because जितना भी बड़ा investment हो रहा है, all the expansion in the economy is coming from these new generation companies only, and some of them are visible, some of them are invisible. So this is a very good trend and a very good development. But as I said, I think MNCs will never get listed. आपको वहाँ पे जाके उनका शेयर खरीदना पड़ेगा. और जो new generation companies है, they are still making losses, and I don't think they should get listed. But by and large, हमारे markets में बहुत ही बढ़िया diversification है when it comes to stocks and industry. मैंने आपको ये बताऊं कि after USA and maybe equal to China, जिस हिसाब से sectors है आपको invest करने के लिए, जो choice है आपको, you won't find anywhere else in the world. I think investors have learned their lessons. Promoters may have, may not have. Whether regulators have also learned their lessons or not. In this entire listing of the new economy stocks, and finally investors have lost a lot of wealth into it. When I say regulator, it means SEBI and the stock market, stock exchanges. With what they takeaways from this entire boom which came a year back, when all the startups were actually queuing up to list in the market with very exorbitant valuations, which was not backed by the real profit. So, इसका message क्या है investor के लिए इस पूरे phenomena का कि hardcore profit के बिना stock market माफ नहीं करेगा. Stock market जो वैल्यूएशन है और जो इंटरनेट इकोनॉमी में हाई वैल्यूएशंस हैं उनको उन पे उतना ट्रस्ट नहीं करेगा जितना कि वो ब्रिक एंड मोटार मॉडल के प्रॉफिट को पे ट्रस्ट करता है. क्या ये मैसेज है स्टार्टअप कंपनियों के लिए इस पूरे फिनोमेना का? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा थिंकिंग थोड़ा अलग से है, क्योंकि मेरी राय में सेबी है या स्टॉक एक्सचेंज है, दे आर परफेक्टली राइट in not going into the valuation of the company. ये उनकी, that is not their domain, that is not their mandate. उनका काम यही है कि आप, उन्होंने जो regulations बनाए हैं आप उनको follow कीजिए. Have you been transparent? Have you disclosed all your risk factors? आपका prospectus detailed है, आपकी पूरी business plan आपने समझाई है. There are no malpractices when it comes to disinvestment or placement of stock. तो दे हैव गिवन द चेक्स एंड बैलेंसेस के आप जो रूल ऑफ द लैंड है वो आप फॉलो करो. वैल्यूएशन के लिए दे कैन नॉट एंड दे शुड नॉट, और ग्लोबली भी कोई भी रेगुलेटर वैल्यूएशन पे ओपिनियन नहीं देता है. सो दे कैन नॉट से कि बिकॉज आप एक्सपेंसिव हो आप लिस्ट नहीं कर पाओगे. वो उनको दे शुड नॉट गेट इनटू दैट सब्जेक्ट एट ऑल. हाँ, एज इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड एमेच्योर इन्वेस्टर्स, they thought that they had understood these companies well, and the companies thought that the secondary market had understood them well, and that the secondary market investors would have the same patience and long-term vision as their private equity investors. लेकिन ऐसे हुआ नहीं, और जो हुआ वो is that the secondary market investors, professional हो या amateur हो, they are looking at quarter on quarter, क्या आप declare कर पा रहे हैं. Or these companies they think in terms of 3 years, 5 years, capturing the entire Indian market, changing habits. तो उसमें समय लगता है. और उस दरम्यान क्या हो गया कि पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ गए, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, और जो पूरा स्टार्टअप का वैल्यूएशन ग्लोबली था उस पर पूरा आई वुड से नॉट अ क्रैश, बट वी सीन वेरी वेरी शार्प डिक्लाइन इन द स्टार्टअप वैल्यूएशंस ग्लोबली, और इसका सीधा सीधा असर हमारे मार्केट्स पर भी आ गया. सो आई थिंक दैट वी कैनॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ दीज स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स टू गेट लिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया. और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, अगर उनकी आप इन्वेस्टर रिलीजेस पढ़ेंगे तो सभी जो प्रोमोटर्स है, एमडी, सीईओ है, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाँ 24 में विल बिकम प्रॉफिटेबल, 27 में विल ब्रेक इवन एबिटा, ये बिजनेस निकाल देंगे तो बाकी का बिजनेस जो कोर है वो प्रॉफिटेबल है. तो उनकी पूरी भाषा ये हो गई है कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट आई बॉल्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड ट्रांजैक्शंस, उनकी पूरी थिंकिंग, पूरा कम्युनिकेशन ये हो गया है कि हाँ हम प्रॉफिट करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट कम कर रहे हैं. सो दैट इज आई थिंक अगेन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड दे आर रीलुकिंग एट द बिजनेस मॉडल टू मेक श्योर दैट दे कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट. So before I open floor for questions, one last question. उसके बाद हम जो सवाल लेंगे. Indian stock markets have given very good return with the inflow of cheaper capital from the abroad. This time I'm talking about the
balance of FPIs and DIs in the Indian market. हमको सबको पता है कि पिछला पूरा एक decade था जब पूरी दुनिया में interest rate कम थे, capital cheaper थी, and a lot of money has traveled to emerging market including India, and Indian growth has attracted a lot of investment. Now the scenario is changing. We are going towards a different direction. When cost of capital is rising, US is talking about 5.5% interest rate. European markets are going. Now, how do you see it coming up when the cheaper capital will not be available globally and also in India because interest rates are rising? ऐसी सिचुएशन में स्मॉल इन्वेस्टर्स को कैसी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा भारत के शेयर बाजार में अभी भी विदेशी निवेशक FPI लेकर आते हैं और वो निवेश इंडिया के लिए काफ़ी समय से FDI के अल्टरनेट के तौर पर भी आ रहा है, and it has helped India to make its forex reserves also. So how this whole shift which is coming, where the cheaper capital will not be there, what a smart investor should remain cautious about going forward 2 to 3 years down the line? See, you are ending with a very difficult question, because this whole thing about high interest rates is the real problem in the stock market just now. अगर आप कोई भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर मुझे भी पूछेंगे कि मार्केट में इतनी बिकवाली क्यों है, वाई आर वी हैविंग सच सेलिंग प्रेशर, वाई मार्केट इज गॉन नोवेयर फॉर लास्ट 1 year, तो उसकी वजह यही है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है. जब भी इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा रहते हैं तो ग्लोबली एंड इन इंडिया more and more liquidity goes toward the debt market, and that is what we are seeing in our markets. पर ये सब cycles रहते हैं, और if interest rates are high, eventually when global economy goes into recession, then the central bank will come and reduce the interest rates. So as a patient investor, आपको just sit on your chair, do not panic. एक टाइम आएगा कि ये पूरा इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो है वो रिवर्स हो जाएगा, and from that point on you will see fabulous returns coming into the equity market. So you have to just wait patiently for that. Second thing, if I may just say that there were 3 structural problems with India. One, we had coalition governments. Second was oil prices, which was then getting reflected in budget. And third was incessant selling by FIIs. अभी आप देखेंगे कि ये तीन structural problems हैं ना solve हो चुके हैं. We have a very strong government at the center which is pro reform. Oil prices का जो भी है बढ़ते हैं घटते हैं, पर उसका असर government finances पे नहीं आता है. There is no subsidy, massive subsidy given by the government to when the oil prices go up. और तीसरी बात, from stock market point of view, जब भी कोई भी problem होता था world में, like global financial crisis, .com bubble, फिर वो sovereign crisis थी 12-13 में, we would see massive FII selling and our markets would be down 20-30%, also sometimes 50%. But now we have the power of the small investor, which is a good counterbalance to the FIIs. और ये जो small investors का जो पैसा है, that is what we need to channelize in a very systematic manner into the stock market to act as a counter force to the FIIs. आप जानते हैं कि FI की जो holding है, it is at a multi-year low, और retail की जो holding है is a multi-year high. So this is a phenomenal position to be in. और अगर हम ये trend और भी strengthen कर सकते हैं, तो हम हमारे we would be the master of our destiny, and not some foreigners, who sell for some reason के Silicon Valley में बैंक उठ गया तो इंडिया में जाके बेचो, तो ये will get out of those risk factors. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 3-4 साल में इंडिया के स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. विदेशी निवेशकों पर डिपेंडेंस कम हुई है, भारत के छोटे निवेशकों का पैसा बाजार में है, और वो भी म्यूचुअल फंड और SIP के थ्रू आया है. और रेगुलेटर्स ने जो रिटेल की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको कट करना शुरू किया है. हमने देखा अभी नीलेश यहाँ बोल कर गए कि देयर इज नो फ्यूचर फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स इन फ्यूचर ट्रेडिंग. सो दिस मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस कमिंग इन स्टॉक मार्केट. सो India has got huge saving reserves. If they'll start channelizing in the market, dependence on foreign funds will definitely reduce. और इसलिए हमने देखा कि इस पूरे पीरियड में भी इंडियन स्टॉक मार्केट में उतनी वॉलिटिलिटी नहीं आई. आई एम ओपनिंग फ्लो फॉर क्वेश्चंस. वी हैव टाइम फॉर ओनली 2 questions. I think one gentleman at that side. Please introduce yourself. Here. Thank you very much for enlightening session. My name is Dipan Mehta. I am calling from Modern Group. Sir, जो ये बात है ट्रस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर,
मुझे ये जानना है सर कि रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है, आज 90% ऑफ द जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में है, बैंक में, एफडीज में पड़ा है, गोल्ड में पड़ा है, तो ये जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ये म्यूचुअल फंड वाले क्यों नहीं ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं? वाई दे आर नॉट एजुकेटिंग द स्मॉल इन्वेस्टर कि अल्टीमेटली डाउन द लाइन यू हैव टू सी व्हाट हाउ यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन और आपकी वैल्यू वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है। तो ये एक मेरा प्रश्न था। और क्या इज इट पॉसिबल कि हम ये इंडस्ट्री को कुछ सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें? अगर आप बोलते हो कि 5 साल तक इक्विटी में पैसा रखो तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, कैन वी क्रिएट सम सेफ्टी नेट बाय सेइंग कि ओके आपको रेट तो मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा, बट एटलीस्ट वी गिव यू सेफ्टी फॉर योर कैपिटल कि आपको अभी 60% चल रहा है तो हम 4% तो कम से कम आपको गारंटी देते हैं। कैन यू डू समथिंग टू द ट्रस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स? आई थिंक दैट कैन टेक इट लॉन्ग वे। थैंक यू।